وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ بھارتی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، کنٹرول لائن پر بسنے والے عوام ہر جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ ماضی میں بھارت نے کنٹرول لائن پر جارحیت مسلط کی، لیکن عوام کے چہروں پر کبھی خوف نہیں آیا۔ کنٹرول لائن پر بھارتی مورچوں کے سامنے اس وقت وزیراعظم آزاد کشمیر کے ساتھ نمائندہ سما امیر الدین مغل موجود، انہی سے بات کرتے ہیں۔ جی امیر الدین، بتائیے۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں، لائن آف کنٹرول پر ٹیٹوال سیکٹر میں، اور یہاں پر آج دورہ کیا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے، اور ان کے ساتھ ان کے وزراء میاں وحید اور سردار جاوید ایوب بھی موجود ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے استقبال بھی کیا۔ ہم پوچھیں گے جہاں وہ کھڑے ہیں فیصل صاحب کے، اس کے پیچھے جو آپ کو میں دریائے نیل کے پار نظر آ رہا ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، ایک ہی خون ہے، ایک ہی رشتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے یہاں آ کر آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اس تقسیم کو جو 78 سال سے کشمیریوں کے درمیان ہے؟ دیکھیے، یہاں پر آ کر اس بات کا ضرور احساس ہوتا ہے کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ کے سامنے میں یہاں پر کھڑا ہوں، لیکن دوسری طرف آج وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے اس کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو یا ہندوستان کے وزیر اعظم کو یہاں آنے کے لیے شاید 1000 بار سوچنا پڑے گا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری طرف وہاں پر کتنے سال سے ہندوستان کی 7 لاکھ فوج لوگوں پر ظلم کر رہی ہے، لوگوں کو اس 5 اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا کر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے جذبے کو نہیں روکا جا سکتا۔ لوگ آج بھی پاکستان کے ساتھ اس کی افواج کی طرف آج بھی امید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو بھی ہو جائے ایک دن ان کا وہ حق خودارادیت جس کو خود ہندوستان نے یونائٹڈ نیشن میں لے کر گیا اور آج اس کے برخلاف وہ چل رہا ہے، وہ انہیں ایک دن ضرور ملے گا۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جس دھرتی پہ سانس لے رہے ہیں، ہماری پاک افواج ہماری پشت بان ہے، لیکن آج ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس دور میں اور اس دنیا میں یہ اس طرح کے نظام زیادہ چل نہیں پائے گا، کیونکہ آج میڈیا کا دور۔ And today the students are born in the world where technology is not a tool. It's no more a tool, but it is a language. And I think it is no more an accessory, but a companion. So I think congratulations Qasim on organizing this wonderful event. And I've heard it's the 25th anniversary of School of Tomorrow, which of course contributes to the innovation, the IT sector, and now, of course, as we have, and the words and the innovation in the IT sector and the emerging technology, the AI and the machine learning. So I see lots of experts sitting in the room, and sorry, Ian, I forgot you, my friend Ian also sitting here. And why to mention all these names? Because they are the unsung heroes, who, of course, because it's not just about classroom, it is not just about textbooks, it is not about just teaching, but it is also building characteristic of our nation. And that's how I see Beacon House, that the work, the center of excellence, and of course its contribution to women empowerment is worth celebrating. And the sustainability factor, which of course I've been associated with quite closely, and their contribution and assistance to the government sector. Today, under the able, competent and efficient and visionary leadership of Chief Minister Punjab, Maryam Nawaz Sharif, we are trying with a humble contribution to transform the education sector brick by brick, classroom by classroom, and child by child. And her vision for the IT sector, I think, is remarkable, and her innovation. We've started IT curriculum in schools, across schools in Punjab and colleges. We have revived all the IT labs across Punjab with technical AI, machine learning driven curriculum, teacher training, and of course with public-private partnership like people yourself, and the skill development, a newly born skill development IT entrepreneurship department in Punjab government is doing wonders in terms of catching up with the pace of IT revolution across Punjab. Also, I think in this evolving world, emerging technology, and the buzzword that we have today,
AI and machine learning. We, of course, have to catch up with the speed. As I said, that AI and machine learning is not it's not a distant future. सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब खिताब कर रही थी और AI और मुस्तक़बिल के उन्वान से तकरीर कि हमने एक प्रैक्टिस शुरू की हुई है कि जो फॉरेन टूर्स इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शुक्रिया ताहिर अंद्राबी साहब। मीडिया के दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। हमने शुरू से ये प्रैक्टिस रखी है कि जब हमारे फॉरेन टूर्स होते हैं तो मैं वहाँ बजाय पाकिस्तान मीडिया के साथ इंटरेक्शन करूँ, क्योंकि वो इतना हैसल होता है और इतनी मसरूफियत होती है कि वैसे भी वहाँ हमारे कम साथी होते हैं। तो पाकिस्तान में आके मैं जनरली आपको ब्रीफिंग देता हूँ। तो ये लास्ट कोई जो 10-12 दिन थे ये काफ़ी बिज़ी थे और काफ़ी इसमें हमारी एक्टिविटीज़ यानी प्लान थी। तो उस हवाले से मेरा ख्याल था कि चूँकि मॉस्को में भी विज़िट थी, ब्रसल्स में विज़िट थी, उसके बाद बहरीन में विज़िट थी और फिर कल ECO की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग थी। तो इन चारों चीज़ों के हवाले से मेरा ख्याल था कि आपको मैं ब्रीफ़ कर दूं और आपके ज़रिए कौम को भी ब्रीफ़ हो जाएगा। तो इस हवाले से मेरी जो सबसे पहली मीटिंग थी वो मॉस्को में थी। 17 तारीख को हम यहाँ से रवाना हुए थे और वहाँ पहुँचने के बाद हमारी जो मीटिंग्स थी वो अगले दिन रात तक रहनी थी, यानी 17-18 हमारा 2 दिन का मॉस्को का विज़िट था। उसमें ये जो मीटिंग थी वहाँ शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग थी, SCO की, और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग थी। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं। नॉर्मली वो और इसी तरह जहाँ भी पार्लियामेंट्री हुकूमतें हैं, जैसे इंडिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स को मीटिंग में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं और जो हेड्स ऑफ समिट की मीटिंग होती है उसमें फिर वो जो सदूर हैं जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के और जो पार्लियामानी सिस्टम है उसके वज़ीर आज़म शिरकत करते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे तेंजिन में चंद महीने पहले शंघाई कॉरपोरेशन की हेड्स ऑफ समिट की मीटिंग थी, तो उसमें वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और मैं उनके साथ था। तो इस मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्लेजेंट मीटिंग थी और हमने अपनी जो पर्सपेक्टिव है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से प्रोएक्टिव जो पाकिस्तान का स्टैंड होता है, इसकी 2 फॉर्मेट होती हैं। एक तो नैरो फॉर्मेट होती है जो कि परमानेंट मेंबर हैं उनकी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग, एक एक्सपेंडेड फॉर्मेट होती है जिसमें